Assalamu alaikum, guys. This is Ali Baqir Khan with another episode of Youth Alumni Association. Today, we've got Rubab Zahra Naqvi with us again. And we had a session with her before. First of all, Rubab, how are you doing today? Walaikum assalam. Thank you for having me. And I am doing good, Alhamdulillah. I hope you're well too. Alhamdulillah, I'm pretty good as well. Thank you so much for asking. So today's topic is going to be changing trends in Pakistan in terms of our lifestyle, in terms of different trends that, I mean, for example, if a person is going for, changing his or her career, for example, he or she wants to marry someone, you've got certain standards that we guys have in regards to, different age that we have actually tied that, okay, after 30s, you're supposed to marry, in early 20s, you're supposed to study. So we are following a pattern in our lives, which I think we guys need to change a little, and you guys should come up with different new ideas. This is what Rubab and I was discussing earlier, and we guys thought of coming up with a podcast for spreading some awareness regarding this topic as well. So Rubab, do you want to throw some light upon the changing aspects in Pakistan, and do you want to go ahead and start off, and then I'll add into this as well further? Of course, of course. So, like we were discussing, since COVID happened and like the past 2 years, 2.5, now 3 years, I think all of us, even globally, we just started winging it at first because everything that we knew that works stopped working. So probably that was like our break or some sign from nature कि नई चीजें try करो तो पता चलेगा कि okay, it's not always supposed to be a set pattern towards success or towards a desired outcome. There can be several ways, several paths that you can take, several areas of experimentation और सारा कुछ. तो फिर ये चीज भी अब थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा लोगों ने ड्यूरिंग कोविड रियलाइज करना शुरू किया कि सर्कमस्टेंशियल डिफरेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं, सिचुएशनल डिफरेंसेस, अपॉर्चुनिटीज सबकी बहुत अलग अलग होती हैं, एंड दैट एक्चुअली ट्रांसलेट्स इनटू वी ट्राइंग टू चेंज आवर पैटर्न्स के जरूरी नहीं है कि by 30 everybody should have a set career. ठीक है, some people can pivot at the age of 30 or in their late 20s, realizing कि ये सारा जो है career वाला सारा the entire bit, that's not me. मैंने तो कुछ और करना था. सही है. Probably हमने पिछली podcast में भी बात की थी कि an engineer might have a passion for music. सही है. A marketer might just want to be a painter, ठीक है, a sculptor, सही है. So and ये सारे obviously थोड़े artistic side पे चले जाते हैं, but I know people जिन्होंने चीजें रोक के दोबारा even things like careers as difficult as medicine भी दोबारा pursue किए हैं, जो कि इतने लंबे careers होते हैं, still they did it because eventually COVID ने हमें बताया कि हमें पता तो था, but उसने we like realized we've got other things as really well. Yeah, exactly, it's really in our face now that you've got only one life. So that's actually like COVID made us think about कि we don't really want to give a shit about what other people say, pardon my French, but so the concept of having more intimate weddings, not having like 500 people invited. Yeah, we have a lot of budget for the weddings as well. I mean, we cannot have a simple wedding. Yeah. Why? Because what would people say? Exactly. Log kya kahenge? There is a very big statement, that is revolving in our minds, especially, upper and lower middle class in Pakistan. I mean, why are we so much concerned? एक मैं आपको छोटी सी रुबाब इसमें बात ऐड करूंगा कि अगर आप एवरेज लाइफ स्पैन देखें तो 79 years ऑफ योर एज अगर आपकी है, जो कि बहुत अच्छी एज है, उसमें you live 28,400 something days of your life, जिनमें से 9,000 days you spend sleeping. So आपकी 20,000 साल की 20,000 दिन की जिंदगी है, उसमें भी if you're gonna actually think about doing things, it's not bad being pragmatic, but it's never bad as well if you're actually taking that risk, and eventually यहीं से entrepreneurs बनते हैं. बट होता क्या है, वही माएँ होंगी, नहीं बेटा बहुत सी लड़कियां मिल जाएंगी, टॉकिंग फ्रॉम अ गाइस पर्सपेक्टिव, अभी पढ़ाई पे फोकस करो, शी इज नॉट गुड फॉर यू, आई एम टेलिंग यू, कल को तुम पछताओगे, ये एक इमोशनल ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है. फिर होता क्या है, इवेंचुअली बाय द टाइम वो 30s में आते हैं,
वो कहते हैं ठीक है मामा, जहां रिश्ता कराना है आप करा दें, एंड इवेंचुअली सो ऑन एंड सो फोर्थ, आई डोंट लाइक द गर्ल डज नॉट लाइक द गाय. सो अब इस्लाम की एक बड़ी एग्जांपल मैं कोट करना चाहूंगा. आपके हजरत खदीजा वाज 45 and Prophet sallallahu alaihi wasallam was in his 20s, correct me if I'm wrong, when she was the one who sent the proposal. So when Islam is giving this thing, जो कि एक पूरा idea है, एक ideology है हमारे पास, तो who are we to actually go ahead and create those hurdles between us? I mean, this is a very good thing that you brought up. And apart from that, I've also felt one more thing, and that is changing trends in a way that people mostly are, sleeping late at night. I mean, it's a cool Yeah. status symbol that if you're on your vacation, you're not supposed to get up early, 6 o'clock. I mean, why should you go to the mosque and read Fajr namaz, and why should you study at that time? हालांकि that's the best time to study because आपकी जो memory है at that time, because it's very peaceful, health wise be, you get a lot out of it. So what would you like to comment on this thing? I mean, do you think social media is playing a certain role in this aspect as well? I just feel like it's the not just the social media but internet in general. जैसे हर चीज के प्रोज और कॉन्स दोनों होते हैं, इंटरनेट के भी हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ह्यूमंस आर मोर ड्रॉन टुवर्ड्स कॉन्स. जब मतलब अगर हम सिर्फ इंटरनेट की भी बात करें, आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ नेटफ्लिक्स फॉर इंस्टेंस. और अगर याद हो कि जब कैंडी क्रश आई थी, ठीक है, कैंडी क्रश आई और it was just a game, it's still just a game, it has lost its popularity right now, सही है. और people used to, there was these conspiracy theories that you can get addicted to it and you can kill yourself for it and all of that. So that addiction to the internet, sometimes in the form of games, sometimes in the form of just watching that content, जैसे Netflix की बात हो रही है इसी तरह. And also sometimes as basic as just scrolling, it actually is very very, I would say, counterproductive for you. सही है. क्यों क्यों क्योंकि मैंने ये चीज like I would, आपने भी की होगी, but first hand experience है. Since I'm a marketer, I'm always scrolling. I am a social media marketing manager right now. Yeah. So मेरा काम ही सारा social media है. Scrolling is literally part of my job. सही है. But even just not for the job, मैं वैसे भी बहुत ज्यादा social media use कर, and that creates brain fog. सही है. I would like even in person conversations, I would respond with delays. ठीक है. I would find myself thinking कि मैं क्या बात करना चाह रही थी. It would be difficult for like, and it's a study as well. I wouldn't want to quote the wrong study, but it is a study. I read it somewhere that people who spend a lot of time on social media, they're not using their voice a lot. ठीक है. क्योंकि कभी कभी होता है हम, all of that is probably ज़्यादा written, silent, viewable content one way. So the communication is one way. सही है. And then we just don't stop making meaningful social interactions. We also stop using our voice. ठीक है. मतलब the actual जो मैं मतलब I mean, आप we cannot अपना organ convince की the बात other कर रहे हैं. person. सही है. That's what you're trying to say. Yeah. We don't have enough सही है. courage to go ahead and come up with logic, और हम उसको I'm not logically justify करें. हाँ, I'm That's not what you're just trying to talking say. about the I'm not just talking about the courage. I'm also talking about कि बात करने का, मुंह से बोलने का भी दिल नहीं करता यार अब तो. ठीक है. क्यों? क्योंकि हम इतना ज्यादा स्क्रॉल करते हैं, हमें आदत नहीं रही. ठीक है. Unless it's a rant. ठीक है. Unless we are ranting, हमारा बात करने का, कॉन्वर्सेशन होल्ड करने का दिल नहीं करता. एंड प्रोबेबली दिस आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट, या फिर मैंने अपने अंदर जल्दी रियलाइज कर लिया कि इतना ज्यादा नेटफ्लिक्स मैराथन्स करके, इतनी ज्यादा स्क्रोलिंग करके आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी क्रिएटिविटी, आपका सोशल इंटरेक्शन और ऑल्सो योर टॉलरेंस फॉर सोशल इंटरेक्शन ऑल्सो डिक्रीजेस. ठीक है. मतलब you are getting educated, I'm not saying you're not, but all of that actually makes you kind of not very fond of human interactions in person. सही है.
एंड फिर आपको इवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता ये भी रियलाइज होता है कि आप बहुत एंटी सोशल होते जा रहे हो, इवन दो यू आर वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया. देयर आर मीम्स दैट, मतलब मीम्स ऐसे होते हैं कि ब्रो आई जस्ट एग्जिस्ट ऑन सोशल मीडिया, आई एम नॉट इवन एन एक्चुअल पर्सन. सही है. सो दैट्स बिकॉज आपकी एक्चुअल पर्सनालिटी पे हम फोकस करना छोड़ चुके हैं. जो हेल्दी हैबिट्स But थी हमने Rubab, वो yeah, छोड़ दी. वही मैं बात करना चाह रहा हूँ कि for example, if I'm not posting something on Instagram for like a month or two, let's for example you my colleague और आप मुझे कहते हैं यार अली मैं बड़े अरसे बाद आपसे रीच आउट करता हूँ, आप कहेंगे यार are you the same Ali जो कि मुझे Instagram पे you guys used to reach out और कहते थे कि यार let's do a podcast, what happened, are you okay? मतलब I would be like कि हाँ यार everything is fine, क्या हो गया है? Just because आपने मुझे सोशल मीडिया पे नहीं देखा, आपको ऐसे लगने लग जाएगा कि यार मे बी समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, या हमारी एक assumption बन जाएगी जब तक हम लोगों को दिखाएंगे नहीं. तो देयर इज अ लॉट गोइंग ऑन दीज डेज इन विच इवन ब्लॉगर्स दीज डेज एक एडिक्शन बन गई है कि जी सुबह उठना है, अपनी डेली उठने की 10 o'clock की रूटीन भी बतानी है. There is no point of doing that. Everyone knows what to do. We should focus on the fact that it's not good to actually go ahead and spread your personality, market yourself. If you're a blogger, take pictures. But सिवाय अगर आप किसी भी ब्लॉगर की एक हिस्ट्री खोलें, बड़े बड़े टीवी स्टार्स भी हैं, उनकी अपनी पिक्चर्स इतनी ज्यादा लगी हुई हैं कि जितनी जगह पे वो घूमे हैं अगर उनकी लगा लें तो आई थिंक लोग कुछ सीख भी लें. अगर वो एक मैसेज या एक डेली कोट भेजना शुरू कर दें वॉइस नोट के साथ. आई अंडरस्टैंड दैट actor actresses, you guys are handsome, pretty and all that, we do understand, but उसके साथ साथ थोड़ा एजुकेशन की तरफ भी आए ना, आप उसको यूटिलाइज करें to help out people, because there are a lot of people who are attracted towards what you say and all that. So instead of just letting them know that this is the zone that you are supposed to follow, अब होता क्या है कि जो लड़के हैं फॉर एग्जांपल वो बॉलीवुड मूवीज देख के वो बिल्कुल ही लो क्लास हरकतें करने शुरू कर देते हैं. I know, you know what I'm talking about, right? So लड़कियां usually क्या इंस्पिरेशन लेंगी कि यार वो मैंने ब्लॉगर देखी थी, she's really cool, she's got a lot of followers, I so want to become like her as well. Understandable, we're not saying आप ये मत करें, but apart from that, think about your daily life, think about your goals in life, think about your daily schedule. I mean, आप कितने बजे उठते हैं, आप क्या करते हैं, what sort of diet are you guys consuming? Because eventually everything has its effect. So that's my point as well. What do you think about it personally? Is that actually happening? Yeah, I mean, would you like to disagree or agree with the fact that I I just think that is नहीं, I think that's definitely happening, but मतलब जो आपकी concerns हैं वो बहुत valid हैं, but they are only on the surface, I would say. जैसे अगर आप like if you say कि जी the audience is to blame for it, I would say, ठीक है. We are the ones जो जिन्हें इतना इंटरेस्ट है कि किसी और के घर में क्या हो रहा है, ठीक है, जो पूरे पूरे 20-20 मिनट आधे आधे घंटे के व्लॉग्स यूट्यूब पे देख के उसमें मिलियंस ऑफ व्यूज होते हैं, और द कंटेंट क्रिएटर दैट आर क्रिएटिंग दैट कंटेंट, मतलब नो हेट ऑन देम यार, दिस इज व्हाट द ऑडियंस इज लुकिंग एट, ठीक है, कि I agree. लिटरली कि उनके घर में क्या हो रहा है, उनके घर में क्या हो रहा है, रोस्टिंग आपको एक क्या बन गया इंटरेस्ट कि है यार यार. उसने ये ब्लॉग बनाया तो ठीक मैं उसको रोस्ट करूंगा, आपने वो देखी होंगी. Yeah, ठीक so है yeah, कि exactly. So this is the kind of content that the audience is so responding what's the best to. productivity These in are that? the I mean, people. are you These getting my are the point? people. Ji. Yeah, so these are the people I would say that I can actually name a few influencers or the YouTubers, bloggers जिन्होंने शुरू किया था यार, उन्होंने भी कि यार हम informative content बनाएं, ठीक ठीक है, है. ठीक है. Eventually क्या हुआ, they fell into that trap of getting those views because they're earning, like that's their job, ठीक है, उन्होंने उससे पैसा कमाना है, सही है. अब the audience would only react to or respond well to roasting, ठीक है, to vlogs of day in my life, ठीक है, चाहे वो कुछ भी ना हो डे इन योर लाइफ, ठीक है. लोगों की शादियों पे क्या हो रहा था, किसने पूरा जोड़ा लाइक कैसे पहना 30 है, लाख का लड़कियां जोड़ा पहन स्पेशली. लिया, अच्छा एग्जैक्टली, इतना सही महंगा, है. सो पैसे कहाँ लाइक से आए? हाँ सही है. सही, हाँ हाँ. सही है. सो द थिंग इज कि यार दे पिवटेड, सही है, जो कर Yeah. भी रहे थे ना So कुछ काम, we are दे creating the पिवटेड. culture ourselves basically. I mean, you are एग्जैक्टली. blaming the तो society. So why do we blame politicians के यार वो
ये हो रहा है, तो वो करप्शन, जब आप लोग भी वही सब चीजें कर रहे हैं जो कि अपर लॉट पे हो रही है, देन व्हाई डू वी ब्लेम सो इजीली कि यार आपकी, सिंस यू आर अ सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर राइट, आपके अंडर एक टीम होगी, आपके कोई तो होता होगा ना, अब कल को जब आप उनको कुछ सिखाने बैठेंगे वो कहेंगे यार रुबाब ही है बस, ये जो है ना ये मुझे ये करे। पॉइंट इज कि हमने ना एक ब्लेम गेम शुरू कर दी है। वेरी इजीली वी गाइस कम अप विद दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस जहां पे हम इजीली, बस हमें ये है कि जी मामा बाबा ने कोई बात की तो हम उनको जाके कह देंगे फट से कि नहीं जी ये सिचुएशन थी, मेरे तो पेपर्स अच्छे थे, वो तो जो जिसने चेक किए हैं आई थिंक उसकी गलती होगी। पॉइंट इज कि एग्जैक्टली, वो सो दैट्स व्हाट आई रिचुअल्स एम कहाँ सेइंग गए? कि देर एक फारसी का एक शेर था जो मेरे फादर ने मुझे बताया था, अदब ताजेस अज लुत्फ इलाही। सो आई स्टिल रिमेंबर दैट कि अदब का ताज बड़ी मुश्किल से मिलता है, मतलब आई रिमेंबर दोज वर्ड्स, मतलब इट वाज फारसी बट स्टिल आई रिमेंबर उन्होंने ट्रांसलेट करके अदब के बारे में हमें सिखाया। एक चीज होती है तालीम, उसके साथ होती है तरबियत। तो वी आर फोकसिंग अ एग्जैक्टली लॉट ऑन द तालीम पार्ट, एंड तालीम में भी आई बी वेरी ऑनेस्ट व्हाट वी आर फोकसिंग ऑन, इसके बच्चे की ग्रूमिंग अच्छी हो, उसने ब्रांड अच्छा पहना हो, उसको जो है वो बस सोशलाइज कर ले, एंड दैट्स प्रीटी मच इट। इंट्रोवर्ट्स की तो जिंदगी खत्म हो गई है, एज यू वर सेइंग। हाँ, अब दैट्स वेरी बीइंग ट्रू। एन इंट्रोवर्ट इज फाइन यार, कुछ लोग नहीं करना चाहते 100 लोगों में बैठ के बात। वी डोंट नीड टू क्रिएट मोटिवेशनल स्पीकर, सब लोग नहीं मोटिवेशनल स्पीकर्स बन सकते। आप अच्छा बात करती हैं, फेयर इनफ, बट इफ समवन इज नॉट डूइंग इट व्हाई डू यू फोर्स देम? आप सोशल मीडिया पे हर बंदे को क्यों ले, एक सेकंड बाद, डू यू रिमेंबर जब आपका, क्योंकि हमारा सेम ही ये कह रहा था, एक हॉटमेल पे हमने अकाउंट बनाया था, एक वो कंप्यूटर में साउंड होता था, कार्ड स्क्रैच करके हम लगाते थे, बड़ी क्यूरियोसिटी होती थी कि कोई इमेज लोड हो जाए, और हम लोग, आई स्टिल रिमेंबर इवन मी being a guy, while uploading my pictures, I was very, sensitive about it कि यार मैं तो इतनी पिक्चर्स नहीं लगा रहा, मतलब वो ऑर्किड होता था उस जमाने में। तो अब इतना ज्यादा वो गैप आ गया है, और ये 5 years में हुआ है सब कुछ। सो डू यू थिंक दिस इज द डायरेक्शन वेयर वी शुड बी गोइंग टुवर्ड्स? आई फील लाइक इट इज एम्पावरिंग, ओके। सही है, बट आई फील लाइक कि जिस तरह ये पावर लोगों के हाथ में आई है ना, टू वॉइस देयर ओपिनियन, टू कम्युनिकेट, एक ट्विटर पे कुछ लगा दिया वायरल हो जाएगा, सही है, सो मतलब कोई गलत नहीं कर सकता बिकॉज एनीबडी कैन कॉल यू आउट, सही है, दैट्स वेरी एम्पावरिंग। हाउएवर people just don't know how to use that power, सही है। So the thing is that वो जो अब अभी आप बात कर रहे थे ना कि बच्चे को पढ़ाई करा दो, ये कर दो, वो कर दो, एक्चुअली बच्चे को जो पढ़ाई में जो वो ग्रूमिंग की बात है ना, वो ग्रूमिंग सिर्फ दैट्स ओनली हाउ द किड लुक्स, दैट्स इट, सही है, ये बात होती है। बात करना सिखाओ, उसे उसे अपने राइट्स का बताओ, उसे किसी और के राइट्स का बताओ, दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन डू एंड कैन नॉट डू, ठीक है। अभी आजकल ये होता है कि बहुत कम ऐसे पेरेंट्स हैं हु आर एक्चुअली इन्फोर्सिंग दैट यू कैन नॉट हैव स्क्रीन टाइम बिफोर अ सर्टेन एज, सही है, It's लाइक fine, नहीं हो सकता स्क्रीन, which is सही है, fine. नहीं हो सकता स्क्रीन टाइम, ये होना चाहिए, बट That's what I'm talking आजकल क्या about. है, या हाँ. हाँ, आजकल हो क्या रहा है कि यार सिंस इट सिचुएशन ऐसी है, लाइक आई एम नॉट सेइंग कि पेरेंट्स बेचारे जो है वो भी, वो दे आर टू बी ब्लेम, लेकिन सिचुएशन ऐसी है, लाइक इफ the dad is working 2 jobs and the mom is also working and उन्होंने घर पे बाकी भी काम करना है and they have to take care of the kids as well because like इतनी shit economy है, ठीक है, and they need 2 minutes of peace कि अपना काम कर लें, अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर दें, अपनी प्रेजेंटेशन बना लें, डेडलाइन मीट कर लें, कुछ कर लें, वो बच्चे को क्या कहते हैं, ये लो भाई फोन लो, यूट्यूब पे जाके देखो और जो दिल करता है देखो, सही है, यार ऑनेस्टली स्पीकिंग गेम्स मैंने खेलो जो छोटे मर्जी। बच्चों के देखा है, बिकॉज मदर्स दे स्टार्ट गेटिंग अनोयड, एंड वंस दे स्टार्ट गेटिंग अनोइंग व्हाट दे डू इज कि अच्छा यार ठीक है, वॉच इट, जस्ट गो अहेड, and kids they एग्जैक्टली, scroll every damn thing on YouTube and Google that they're not supposed to. Now I remember when I was a child, हमारे घर जब केबल नहीं नहीं आई, पहले तो हमें बड़ा मुश्किल से जी कहना पड़ा नहीं जी हमें चाहिए, अच्छा उसके बाद there was a child lock thing in our TV, वो लग गया, नेशनल ज्योग्राफिक वाज अलाउड, स्टार प्लस पे पहले पेरेंट्स को देखते थे, माय मदर यूज्ड टू सिट विद अस
कि यार कोई गलत कंटेंट तो नहीं है, वंस शी न्यू कि नहीं यार ये बच्चों के ड्रामास है, तो वो हमें फिर फ्रीली छोड़ देती। ये भी नहीं कि हमारे सर पे बैठ जाते थे, बट कोई मूवीज होती थी, वीसीआरस आपको पता होते थे, तो उसमें कैसेट्स होती थी, वी गाइस हैड दैट काइंड ऑफ ब्रॉट अप। I know that I would want my child to wake up and I can change the culture of my own home at least. I'm not saying that मैं कोई गलत चीज की तरफ जा रहा हूं. My wife, she's working, she does everything that she wants to. शॉपिंग करनी है, कुछ करना है, अकेले जाना है, अकेले कोलीग से मिलना है, मेल कोलीग से मिलना है, एवरीथिंग इज ओपन इन आवर हाउस. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट. सो आई हैव गिवन हर इक्वल राइट्स. इक्वालिटी इज देयर, बट वही बात आ जाती है कि आपने बच्चों को बिगाड़ना नहीं है, आपने उनकी तरबियत भी करनी है. आपने उनकी तरबियत किस तरह करनी है? आई विल गिव यू एन एग्जांपल. आई मेट अ गाय हु वाज फ्रॉम एमआईटी. अब ही वाज इन इस्लामाबाद, काफी अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर भी है, सब कुछ है. तो उसने मुझे पहले तो एक एवरेज एज वाली बात बताई. फिर मैंने कहा जी आपके बच्चे भी होंगे डेफिनेटली, तो आप ये सारी बातें लोगों को तो करते हैं, हाउ डू यू इम्प्लीमेंट दैट इन योर ओन होम? अब बड़ी मजे की एक स्टोरी है. उसने कहा यार देयर इज वन सोल्यूशन टू इट. मैंने कहा व्हाट इज दैट? कहता है मेरा छोटा 8-9 ईयर्स, पता नहीं 10-12 ईयर्स का बच्चा था. कहता है आई हैव अ बाइसाइकिल फॉर हिम एंड आई आस्क हिम टू गो टू वो तंदूर जाके और तुम ना रोटियां लगवा के आओ. मैंने कहा व्हाई? तो कहते हैं जी वो इसलिए बिकॉज वंस ही स्टैंड्स इन दैट क्यू आउट देयर, उसको रियलाइज होता है कि कितनी गर्मी है जून के अंदर, और वो बेचारा जो बंदा रोटी लगा रहा है मजदूर, यू नो, मैं कितना ब्लेस्ड हूँ. So you need to tell your children about it. You need to educate. Care if Rubab is a social media marketing manager, so she is something. Yes, definitely you will grow. बट ग्रोथ के लिए अब आप क्रेजी हो जाएंगे, नहीं यार सोशल मीडिया मैनेजर तो नहीं, मैंने तो सीईओ ही बनना है. इट्स नॉट गोना हैपन लाइक दैट. यू आर ब्लेस्ड, यू शुड बी थैंकफुल. तो थोड़ी सी जो हमारी सोसाइटी में एक नीड क्रिएट कर दी गई है कि हम लोग वी आर नॉट थैंकफुल, बट वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर अदर थिंग्स लाइक ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी कर लें, वो भी बना लें. जिस तरह जी अभी मैंने अपनी गाड़ी अगर करोला पे अपग्रेड हुआ हूं, तो कल मेरा अभी 2 दिन पहले बात हो रही थी कि यार ऑडी के बारे में सोचते हैं, या आईफोन प्रो 12 आ गया है, तो अब हम कहेंगे यार 13 क्यों नहीं आ रहा. हमारा माइंड 24/7 इज थिंकिंग अबाउट इट. वी गेट अप, वी वांट टू हैव अ गुड लाइफस्टाइल. अब लाइफस्टाइल क्या है कि जी अच्छा ब्रांड पहने, अच्छा पीनट बटर खाएं, अच्छा ये करें, अच्छा वो करें. तो देयर इज अ लिमिट टू एवरीथिंग यार. मतलब कभी किसी से ये पूछा है उठ के सुबह अपने नेबर्स में जाके, एक कल्चर होता है कि यार रुबाब हाउ यू डूइंग टुडे, यार रुबाब ने कभी वैसे ही मैसेज कर दिया कि अली ऑल इज गुड, हाउ यू डूइंग, दिस इज अ कोट फ्रॉम माय साइड. गलती से अगर कोई किसी को मैसेज कर दे, तो वो ड्रामास जो हम एयर वाई और हम टीवी और इधर उधर पे देख रहे होते हैं, उनका भी एक कॉन्सेप्ट पूरे माइंड में क्रिएट हुआ कि वी गाइस डोंट रिस्पेक्ट ईच अदर एनीमोर. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट. It's happening. It's literally happening. I mean, people have, I'm not going to say they've lost all their values, but it's very easy to just ask someone about things that are very inappropriate. So why is that Yeah, happening again? जी. yeah, on this, like, there are like आपने two कहा था ना points that I वॉइस इंक्रीज करना, वुमेन एम्पावरमेंट. मैंने हाँ, आपको एक अपने घर की एग्जांपल दी है कि माय वाइफ, कभी but आप पूछ लें, शी इज अलाउड टू गो एवरीवेयर बिकॉज वी गाइस ट्रस्ट ईच exactly, अदर. but जी. the thing is, there be the thing is, Ali, matlab, with all respect, and I Yeah. hope you will understand the opinion that I'm trying to put forward here. Um, I feel like, because I know that your intentions here, I can understand what you're saying. So yeah, ठीक but है. the fact that the way we use language, it is also very important. For example, is he conversation mein you've told me that you have given her equal rights, and you have also said that I'm telling you generally बता रही हूँ, हाँ ठीक है? हाँ, You have given go her ahead. equal rights. और दूसरी बात ये, जैसे कि for example you said that she's allowed to do everything. सही है? I अब agree. ठीक है, एक अब the टैबू है thing is, सोशल के यार, शायद मैं so एक मैन हूं तो you मैं सुपीरियर हूं, I'm allowing her basically. It it's shouldn't be that the way. thing, yeah, the thing is that you have matlab you've not said it from a position of power. ठीक है, I know that. सही है? For you, you've not said it from a position of power, but since वो एक male privilege unconsciously exist Maybe करता मेरा है, भी you स्टीरियोटाइप हुआ हुआ हाँ, है, because we live in the unconsciously, same yeah, society, unconsciously subconsciously you बिल्कुल. know that you have that power. ठीक है? Unconsciously A you know very that you valid have that point power. for all men out ठीक there है? as well, including me. And I Exactly. So the wholeheartedly point accept it. is, Go ahead. yeah, so the point is that
फंडामेंटली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, चाहे हम अपने बच्चों की बात करें, आई एम नॉट अ पेरेंट सो आई वुडंट नो कि यार पेरेंटिंग कितना मुश्किल है, लेकिन बिल्कुल मैं ठीक कह रहे हैं देखती आप। हूँ, ठीक है, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्किंग मदर्स हु वर्क विद मी एट द ऑफिस, एंड द वे दे आर हैंडलिंग एवरीथिंग, ठीक है यार, मुझे ऐसा लगता है मैं उसका 20% भी एफर्ट अपने दिन में नहीं कर रही होती जितना वो कर रहे होते हैं, ठीक है, मतलब आई जस्ट हैव टू फेंड फॉर माई सेल्फ, सही है, एक बात है, सही है, मैंने अपने आप को ही जिंदा रखना है सिर्फ, बट टू हैव लाइक ए किड जिसको इट्स इम्पोर्टेंट कि वो बोलना भी सीखे, चलना भी सीखे, खाना भी खा ले, बीमार भी ना हो जाए, ठीक है, It's a huge लाइक, responsibility. एंड It's not that easy. देन ये तो बहुत बेसिक है, ठीक है, कपड़े भी हो उसके पास, वो साफ सुथरा भी हो, ठीक है, बदतमीजी भी ना करे, किसी को जाके मार भी ना दे, लेके खुद भी ना मर जाए, सही है, ऑल ऑफ दैट, सही है, एंड देन ऑल्सो एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज ऑफ द इंटरनेट के व्हाट इज ही लुकिंग एट, सही है, एंड देन अ लॉट ऑफ other responsibility because social interaction है, and the kid does not know what's appropriate and what's inappropriate, तो उसकी protection against molestation and harassment and all of that वो भी करनी है, फिर That's लेकिन your अपनी नौकरी भी responsibility. करनी है, फिर नौकरी भी देखनी नौकरी है. भी करनी है, ठीक है, टेबल पे खाना पहले उसको So you're कमाना है talking खाने को from और a सुबह women's टिफिन खाना है, perspective कि जी आई एम ये टॉकिंग अबाउट एज अ पेरेंट, आई एम टॉकिंग as एज a अ parent. पेरेंट, ठीक है मैं क्यों, समझ रहा हूँ. क्योंकि यार अब द थिंग इज कि मैं तो नहीं हूँ, लेकिन मैं देखती हूँ एंड मैं सोचती हूँ कि भाई ये बहुत मुश्किल है, एंड देयर इज नो गाइड टू दिस, सही है, Yeah, parental एंड counseling नहीं है क्या? How to teach देयर your इज नो गाइड, children? Yeah. देयर इज नो गाइड, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ गिल्ट अटैच्ड टू द फैक्ट दैट अगर आपका बच्चा इज नॉट डूइंग वेल अकॉर्डिंग टू द सोशल स्टैंडर्ड्स, ठीक है, वो अपने माइलस्टोन्स उस तरह से नहीं मीट कर रहा जैसे बाकी सारे बच्चे उस एज के मीट कर रहे हैं, सो देयर इज अ लॉट ऑफ गिल्ट अटैच्ड टू इट, सही है, जो कि I लाइक understand. आई फील अच्छा, लाइक इट्स guilty नॉट होना is not a good thing. I mean, you should never compare yourself with any. Comparison is good as well in a एग्जैक्टली, positive way. एग्जैक्टली, आप compare हाँ, करें ethically. सही है, हाँ, सो Materialistic होके आई, compare मत करें. Yeah. एग्जैक्टली, सो आई फील लाइक कि एक तो वो चीज भी, एंड सिर्फ पेरेंट की बात नहीं है, गिल्ट तो हर चीज से आजकल की सोसाइटीज में जो है, मतलब पाकिस्तानी सोसाइटी में तो हर चीज के लिए यू आर गिल्टी, ठीक है, तुम अपने हस्बैंड से ज्यादा पैसे कमा रहे हो तो भी क्यों कमा रहे हो, ठीक है, तुम अच्छा, नो ज्यादा आई काम डिसएग्री नहीं विद, कर रहे, आपने जो एक बात की थी अब मुझे भी थोड़ा मौका दें ऐड करने को. द रीजन ऑफ आई वाज कोर्स, ऑफ सेइंग कोर्स, शी इज अलाउड. देखें, व्हेन यू आर, अभी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं. देयर वर गेस्ट्स इन माय हाउस जस्ट 5 बिफोर द पॉडकास्ट, और वी वर टॉकिंग अबाउट इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ आवर चाइल्ड इन द फैमिली टुगेदर. तो उन्होंने कहा लेट्स जस्ट गो अहेड, आप मुझे अपनी आईडी कार्ड की कॉपी दें तो हम करते हैं. मैंने कहा देखें, व्हाट आई विल डू फर्स्ट, मेरी वाइफ वहीं पे ही थी, तो मैंने कहा फर्स्ट वी नीड टू डिस्कस इट. once you're going to go, we'll discuss and then we're going to get back to you. तो पॉइंट मेरा वो शायद अलाउ वाला वर्ड मेरे जहन में इसलिए आ गया बिकॉज ऑफ द दैट्स व्हाट आई एम स्टीरियोटाइप सेइंग, पार्ट. बट पॉइंट इज, हाँ, एग्जैक्टली, my message, I want to just clear that very clearly to all the men out there, because I sit in guys and at times guys are like, what, तुम तो शायद बहुत नीचे लगे हुए हो यार, मतलब कंट्रोल में रखो. एग्जैक्टली, इट डज हैपन. मैं तो देखें, चले आप बैठती होंगी उठती होंगी, आप बहुत से लोगों से सुनती होंगी, बट हम तो खैर बैठते हैं ऑब्वियसली सोसाइटीज में, तो वी गेट टू नो ऑल दोस पीपल. तो मेरा सिर्फ और सिर्फ मैसेज ये है इक्वालिटी का, कि इस्लाम में भी ये चीज है कि यू नीड टू गिव द अदर पर्सन द इक्वल राइट टू स्पीक. क्योंकि देखें, कोई टॉय नहीं है, कोई पेट नहीं है जो आपने पाल ली और अब आप कहेंगे कि यार चलो इतने बजे मेरा खाना ले आओ तो इतने बजे मुझे यूं सर्व करो. इट्स अ ह्यूमन बीइंग एंड इट्स अ वेरी गुड रिलेशन. वो सिर्फ आपका अपनी वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ नहीं है, वो आपका अपने पेरेंट्स के साथ भी है, वो अपना बहन भाइयों के साथ भी है, वो आपका हर बंदे के साथ है जिसके साथ आप कनेक्टेड हैं, वो आपके कोलीग्स भी हैं. तो दैट्स व्हाट माय मैसेज वाज, कि यूजिंग योर पावर इज अ गुड थिंग, and by allowing, I'm just saying that you need to consult and discuss it. So nobody is supposed to allow the other person, because wo agla ka right hai to pursue what they want to, but discussion is really important. Why? Because ye cheezein honi chahiye. One more thing that I would like to add on, before we come towards the end is, Rubab, you actually spoke about a very, very good point that I really loved and I wanted to speak about it, and that was regarding parental counseling. कि देयर इज नो पेरेंटल काउंसलिंग एट ऑल, जिसकी वजह से डिवोर्स रेशो भी बहुत हो रही है सोसाइटी में. अच्छे लोग भी हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, बट मैं थोड़ा सा इस तरफ इसलिए आ रहा हूँ बिकॉज थोड़ा सा नेगेटिव एक कल्चर डेवलप हो रहा है, इसकी वजह से लड़ाइयां हो जाती हैं. कोविड में
it happened to a lot of families. मेरे personal friends भी थे, because घर बैठना पड़ गया कि यार क्या हो गया, they could not cope up together. So do you think this is something we also, apart from career counseling, because counseling is a word जो कि क्या चीज है, सीखना, basically किसी से राय लेना, किसी से मशवरा लेना. So what do you think, how can we eliminate this problem? अभी तो आप बड़े लिबरल बंदे से बात करिए ना, मैं तो बड़े इजीली बात करूं. तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उससे बात करते ही बड़े एग्रेसिव हो जाते हैं कि यार यू नॉट सपोज टू टेल मी अबाउट दिस एंड दैट. So there are those people. Then talking about the fact about the counseling part, what do you think, what are the steps that we can take? देखें, इस सोसाइटी में जहां पे फूड एक्सपेंसेस और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस बेयर करना is very tough these days for even upper middle class families now. So it's very, very tough for people to spend the amount by going to a professional consultant and getting that parental counseling, even though I would recommend them to go for it. But if they cannot, what should they do? Yeah, I feel like I agree कि counseling बहुत ज़्यादा difficult है, ठीक है, but मतलब मुश्किल काम है. पहले तो ये बात है कि पैसे लगाना एक सेकेंडरी बात है. पहली बात उससे पहले आ जाती है स्टिग्मा अटैच्ड. स्टिग्मा बहुत ज्यादा है अराउंड काउंसलिंग भी. करियर के अलावा, करियर काउंसलिंग को तो आजकल लोग लाइक हर बंदा ही करियर काउंसलर है और हर बंदा ही करियर काउंसलर के पास जा रहा है, ठीक है. क्योंकि राय मुफ्त है ना देनी. राय तो सभी दे देते हैं. लोगों को ये नहीं पता कि यू शुड ओनली टेक एडवाइस फ्रॉम समवन हु इज एक्चुअली क्वालिफाइड टू गिव दैट एडवाइस, ठीक है. पहले अवेयरनेस क्रिएट करना शुड बी द फर्स्ट स्टेप. देन अगेन द स्टिग्मा, we have to remove the stigma by, and how can we do that is coming out and saying that I need help. So yeah, first telling yourself that you need help. Acceptance is very important. और वैसे तो डिनाइल इज द फर्स्ट स्टेप, लेकिन बहुत लोग जो है वो डिनाइल पे ही रह जाते हैं, आगे पहुंचते ही नहीं है, ठीक है. लेकिन एक्सेप्टिंग दैट यू नीड हेल्प एंड इट इज ओके, ठीक है. वो जो 4 लोग जो कहते हैं कि 4 लोग क्या स्टिग्मा कहेंगे, बना लेते हैं कि लोग क्या कहेंगे, यार फर्क किसको पड़ा है? आप ही को पड़ा है ना इवेंचुअली, अगर मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के बारे में भी बात करें. हाँ जी, those 4 people are not going to be paying my bills. Those 4 people are not going to be taking care of your spouse or your child if you are sick or not there, ठीक है. Allah ना करे, but if those people are not concerned about your promotion, your career, ठीक है, so they are not paying your bills or getting your groceries, तो फिर उनका क्या इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में, unless they are your parents, ठीक है. पेरेंट्स की एक इन्वॉल्वमेंट होती है, आपके स्पाउस की एक इन्वॉल्वमेंट होती है, लेकिन एक्सेप्टिंग दैट यू नीड हेल्प एंड देन पीपल हु एक्चुअली गॉट हेल्प शुड एक्चुअली क्रिएट दैट चेन कह लो कि यार एक चेन हो कि यार मुझे मदद हुई है. अब जैसे आप कर रहे हो ये, ठीक है, आप कह रहे हो कि यार अच्छा ठीक है यार मेरे पास तो उस वक्त गाइडेंस नहीं थी या थी, मैं चाहता हूँ कि और लोगों को फायदा हो. सही है. इसी तरह के और लोग होने चाहिए. आई एम नॉट सेइंग अवेयरनेस तो क्रिएट करें ना. आई मीन एग्जैक्टली, यू आर आई एम नॉट नॉट सेइंग पेरेंटल स्टार्ट अ काउंसलर. हम लोग मैं पेरेंटल काउंसलर नहीं हूं, मैं तो अभी नया नया पेरेंट बना हूं. पॉइंट बीइंग इज के एटलीस्ट वी आर टेलिंग पीपल कि हाँ ये मसले एग्जिस्ट करते हैं एंड वी नीड सॉल्यूशंस टू दीस प्रॉब्लम्स. ऑल्सो एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, अनसोलिसिटेड एडवाइस से रिफ्रेन करना, ठीक है. I keep saying, अब जैसे हम बात करें, these are my feelings, but I am in no way authorized to comment on how to be a parent because I'm not a parent. सही है. And exactly, and I'm not even qualified in terms of कि यार I don't have any degree on behavior, on psychology कि मैं कहूँ. लेकिन ये मुझे पता है कि I have been the person, I have been in need of help. सही है. So मुझे ये पता है कि यार how अच्छा ये होता है कि the person who has gone through that journey उसको ज्यादा realize होता है कि नहीं यार it's really really important and yeah. हाँ लेकिन हाँ exactly, so journey बहुत यूनिक होती है हर किसी की. सही है. and it's very important कि यार ठीक है rant कर लेते हो आप अपने फ्रेंड से, अपने पेरेंट्स से, अपने स्पाउस से, but that rant के बाद जो आपको एक्चुअल प्रोफेशनल हेल्प चाहिए वो बहुत रियल है और आपको उससे बिल्कुल भी भागना छुपना नहीं चाहिए. बट अब अगर हम प्रैक्टिकल बात करें तो प्रैक्टिकल बात यह है कि देयर शुड बी मोर हेल्पलाइंस, ठीक है. लाइक आई हैव हर्ड ऑफ सम, जिस तरह की एनोनिमस हेल्पलाइंस होती हैं वेयर यू कैन जस्ट लाइक टॉक टू क्वालिफाइड पीपल जो वॉलंटियर करते हैं. आई कैन नॉट नेम द वन बट
few of my friends did sign up for it. कि they were just like volunteer people जिन्हें training मिली थी और training के बाद उन्होंने they were just like available for a certain hours to talk to volunteering or people. helping out people हाँ, basically. so to help people out. That's a So yeah, very positive thing that they're doing, and I yeah. wish So them all the best. Yeah. exactly. Yeah, so helplines are actually much cheaper than the वो actually counseling पे जाना और वो सारा कुछ करना. But एक तो अवेयरनेस नहीं है, दूसरी बात ये है कि स्टिग्मा अटैच्ड, और तीसरी बात ये है कि मेंटल हेल्थ होती क्या है यार, पाकिस्तानियों को कुछ नहीं पता. पिछले 10 साल में पता चला कि अच्छा मेंटल हेल्थ असल में कोई बेचारा चीज का है एक अगर टैग आपके बच्चे लगा को देते कुछ हो, बस बड़ा जो बेचारा है है, उसका, हाँ, पागल है, पागल है, इसको तो मतलब दवाई खानी हाँ, पड़ेगी, इसको तो वो करना पड़ेगा, इससे तो शादी ना करें. मतलब पॉइंट, आर यू गेटिंग माय? एग्जैक्टली. So these are all the या things या that are happening, and it's really sad. I'll be very honest, especially being a Muslim. आप तो वो रिलीजन में से हो, जहाँ पे सबसे ज्यादा इसी चीज पे फोकस किया गया है कि इक्वालिटी देनी है. We need to talk about all these rights. So I think it was a good session regarding changing trends. एंड वाकई हमें ये फील हो रहा है. पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि पीपल नाउ कैन गो अहेड एंड स्पीक अबाउट थिंग्स. if you guys are feeling that somebody is violating rules या कोई domestic violence का issue कोई भी face कर रहा है, आप report करें. don't hesitate. why? because अब social media at least is there to protect you. that is one thing. बट सोशल मीडिया वालों को मैं ये भी साथ में कहूंगा कि पोस्टिंग इज गुड, बट ऑल्सो मेक श्योर कि जिसने पोस्ट किया है उसको उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बेयर करने पड़ सकते हैं अगर आप उसकी हेल्प नहीं करेंगे. तो आप सिर्फ पोस्ट कर दें और उसके बाद उसको छोड़ दें तो वो एक दिन की 300-500 लाइक से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अनलेस आप लोग जाके मेक श्योर करें. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे घर के करीब कोई चीज हो रही है, मैं पर्सनली नहीं भी जा सकता तो मैं किसी को भेजूं या किसी 15 या कहीं पे रिपोर्ट कर दूं कि यार उस घर में सामने अगर कोई आवाज आ रही है तो आप प्लीज कर लें. एंड इट्स माय सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्यों? क्योंकि कल को अल्लाह इज गोइंग टू आस्क मी दिस क्वेश्चन कि when there was noise happening and you knew that somebody is doing something to another person, why didn't you do that? ये भूलें मत कि आपकी नेबर्स की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी. इसी तरह आपके कलीग्स हैं, आपके ऑफिस में कोई लोग हैं, लड़कियां लड़के जितने भी लोग मिलके जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं, स्पीक योर हार्ट्स आउट एंड बी व्हाट यू वांट टू बी is the message here today. I think, all right, as you guys can see that there is हाँ. something going on with electricity issue. So thank you so much, Rubab, for your time. I think now it's time के electricity ने भी कह दिया बहुत सख्त बातें हो गई हैं, तो it's time for me to leave as well. And with a note of positivity again, all of us listening, do subscribe to Youth Alumni Association channel. And Rubab, thank you so much again for giving your time out to the youth, just for spreading awareness. Thank you so much for having me. It was a great discussion, and what you're doing here is actually very commendable. Thank you so much. Take care of yourself. Bye bye. Take care. Allah Hafiz. Allah Hafiz.